Uh, in this chapter, we discuss about Unit 5, physical states of matter. Physical states of matter. Unit 5 of grade 9 of 9th class students. So, as far as his introduction is concerned, so introduction about we can say that anything that has mass and occupies space is called matter. Matter matter का मतलब मादा. Anything that has mass and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो जिसकी मास हो और जगह गिरे occupy space उसको मादा कहते हैं. So anything that has mass and occupies space that is called matter. तो हर वो चीज़ जो मास रखे इसकी मास हो और जगह गिरे उसको मादा या मैटर कहते हैं. तो all the substance that you see around are made of matter. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी है, मादा से बनी है. Matter can exist in 3 physical states. Matter मादा जो है 3 हालतों में पाया जाता है. 3 physical states 3 हालतों में पाया जाता है. तो फर्स्ट वन गैस, liquid, second one and third one is solid. So matter can exist in 3 physical states such as gas, liquid and solids. मादा 3 हालतों में पाया जाता है, गैस, माया और ठोस. Now let's move forward. This includes the air that we breathe. यानी इसमें वो चीज़ शामिल है जिसमें यानी हवा जो जिसको हम सांस लेते हैं, we breathe in. The water पानी, we drink जो हम पीते हैं, and the food we eat और खुराक जो हम खाते हैं, food and water and air. So these include यानी हवा, पानी और खुराक. ये सारी चीज़ें मादा से बनी होती है. यानी you can say that these 3 things are composed of matter. So because these 3 things has mass and also occupy space, they are called matter. The scientific study of matter and their physical states of matter provides an opportunity to understand the world. So you can say the scientific study of matter and their physical states. साइंसी तहकीक को जो मादे के मुतालिक हुई है वो और उसकी जो फिजिकल स्टेट है मैटर का वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है, यानी मौका देता है कि हम दुनिया को समझे, टू अंडरस्टैंड. बिकॉज ऑल द वर्ल्ड इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ मैटर. यू कैन से दैट दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो मादा से बनी है. नेक्स्ट वन. नाउ let's come towards all the 3 states of matter are interconvertible to one another. We can say that all the 3 states of matter are interconvertible to one another. मादा की जो 3 हालतें हैं वो उसको एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है. So you can say that all the 3 states of matter are interconvertible to one another. With the temperature of the solid, when the temperatures of a solid is increased, it is converted into liquid.
we can say that if the temperature of the solid is increased, it is converted into liquid. अगर हम किसी सॉलिड चीज़ की, मिसाल के तौर पर बर्फ है, वो सॉलिड है, अगर हम उसको गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उसको हम पानी में यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉलिड जो कि मादा है उसको लिक्विड जो कि भी मादा है वो चेंज किया कर सकते हैं बाय जस्ट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। एंड when the temperature of the liquid is increased, और अगर हम उसी पानी की टेम्परेचर को और बढ़ा लें, जो हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था, अब हम टेम्परेचर बढ़ा के फिर हम मजीद अगर टेम्परेचर को बढ़ा लें तो उस इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। इसको हम गैसियस हालत में लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहले बर्फ़ को गर्म किया, उसे पानी बनाया, फिर उसी पानी को अगर हम मज़ीद गर्म करें तो उसको हम वेपर स्टेट में लेके जा सकते हैं। We can make the liquid into a gaseous state by just increasing its temperature. So gases also, you can say, this is matter. So it justifies that matter can be converted from one form into another, because we have first converted the solid into liquid and the liquid into gas. So we can say that matter can be converted from one form into another. यानी मादे को हम एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं। So it is considered mandatory that one should know that matter and its physical states of and properties. तो ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि कोई भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मैटर और उसकी फिजिकल स्टेट्स प्रॉपर्टीज है उसको हम समझें। Now, in the previous grades, you have learned about the air in the form of gas, and the water in the form of liquid. In this unit, you will learn about the properties of gases, liquids, and solids, gas laws, and types of solids. So, you know that we have first learned, and the previous chapter you have learned about the properties of gases, liquids, and solids, gas laws, and types of solids. So, in this chapter, we will discuss. Now, let's come towards the gaseous state. So, the gaseous state is the state of matter in which the molecules are far away from each other. The state of matter in which the molecules are far away from each other. मादी की वो हालत गैसियस स्टेट मादी की वो हालत है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, काफ़ी फार अवे, दूर होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, एंड देयर इज वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उन में वेरी कम जो है कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो गैस के होते हैं। The particles are free to move in all direction with great speed. तो पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री होते हैं टू मूव, यानी हर तरफ वो हरकत कर सकते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो फ्री होते हैं, वो हर जगह हरकत कर सकते हैं ज़्यादा स्पीड से। गैसेस आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैसेस अगर हम उसको किसी कंटेनर में गैस को बंद करें तो वो गैस उस कंटेनर के दीवार से टकराएगा, और यानी वहाँ तक ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम and occupy the whole volume of the container. Gases की कोई जो है मखसूस शेप नहीं होती, न वॉल्यूम होता है डिफिनिट, और ये जो है ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और ये पूरे कंटेनर का जो पूरा वॉल्यूम होता है उसमें भरे होते हैं। You can say that gases have no definite shape and volume and occupy the whole volume of its container.
मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज कंटेनर, इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस है, ये कंटेनर, इसके अंदर गैस है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये दीवार के टकरा सकते हैं, गैस कंटेनर की दीवार से यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस आर रिस्ट्रिक्टेड, gases are restricted only by the wall of the container. Gases have no definite shape and volume and occupy the whole volume of the container. ये पूरा वॉल्यूम जो होता है इसके अंदर ये भरे होते हैं। तो now this is you can say 5.1 typical properties of gases. So we can say that some physical properties of gaseous states are following. The first one is indefinite volume. Gases have no definite volume and they occupy all the available space. So as we previously discussed here, that the gases, this is the gas you can say, so this has no definite volume and they occupy the whole container. I can say all available space. ये सारी स्पेस में भरे होते हैं कंटेनर के ना, तो इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। और आगे gases have no definite volume and they occupy all the available space. Oh. Number second is indefinite shape. So we have discussed that gases have no definite indefinite volume. Gases have no definite volume and they occupy all the available space. Now we will discuss that number second, indefinite shape. So you can say that gases don't have shape or take the shape of the container in which it is placed. So यानी गैस की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, बल्कि वो जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है गैस उसी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, because they spread through the volume of the container. You can say that gas have no definite shape and so इसको जिस टाइप के कंटेनर में डाला जाए तो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेते हैं। Now let's come towards the at the third position is diffusion. So what is you can say diffusion? So diffusion describes the movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Diffusion ये हमें बताता है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो किस रीजन से किस रीजन में जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस जगह पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उस जगह से मॉलिक्यूल हरकत करेंगे, कहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम हो। मिसाल के तौर पर पानी जिस जगह पे ज़्यादा खड़ा होता है, जिस जगह पे कम खड़ा होता है, तो पानी हमेशा ज़्यादा यानी जो वॉल्यूम वाली जगह से कम वॉल्यूम वाली जगह पे ट्रेवल करता है, तो ये जाता है। या अगर हम दो कंटेनर में एक में ज़्यादा गैस बंद करें दूसरे में कम हो, तो वो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं और दरमियान में कोई मोमेंट ऑफ वे हो, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले वॉल्यूम की तरफ जाते हैं। In other words, the molecules tend to move from a more crowded region to a less crowded region. यानी ज़्यादा जो रश वाली जगह से मॉलिक्यूल हमेशा कम रश वाली जगह पे ट्रेवल करते हैं और इसी से कुदरत का कानून है। Once the molecules become evenly distributed throughout the medium,
there will be no net diffusion in any particular direction. जब एक जगह पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, दूसरी जगह पे कम हो, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे जाएंगे। और जैसे ही दोनों का वॉल्यूम जो है बराबर हो जाए, यानी दोनों जगह पे मॉलिक्यूल बराबर हो जाए, तो देयर विल बी नो नेट डिफ्यूजन। वहाँ पे फिर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगी और किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जगह पे मॉलिक्यूल इक्वल हो गए। So we can say that once the molecules become evenly distributed throughout the medium, there will be no net diffusion in any particular direction. So by definition, we can say that diffusion is the movement of molecules from a region of high concentrations to the region of low concentration. When for some time when the distribution of molecules from a region of high concentration to a region of low concentration takes place, then a point will be reached on that there will be net equilibrium between the two places containing molecules. So after that there will be no net diffusion, no diffusion occur. I can say diffusion will be stopped in any particular direction. So next one, gas molecules are in constant random motion. गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं, रैंडम हरकत में होते हैं, मोशन में होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मोशन, इस हरकत की वजह से द गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज वेरी क्विकली, यानी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं एंड फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस से मुराद ये कि इक्वल, जहाँ पे यानी एक अगर गैस का वॉल्यूम है तो वहाँ पे अगर मॉलिक्यूल ऑफ गैस सेम डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। So we can say that gas molecules are in constant random motion. Because of this motion, the gas molecules diffuse very quickly and form a homogeneous mixture. यानी जो हमने ऊपर पढ़ा है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे गैस के मॉलिक्यूल जाएंगे तो वो डिफ्यूज होंगे बहुत जल्दी और वहाँ पर एक जगह पे होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके बाद the spontaneous mixing of molecules of different gases to form a homogeneous mixture by random motion and collision of the molecule is called diffusion. तो ये डिफ्यूजन की तारीफ बयान की गई है, डिफिनीशन है ये डिफ्यूजन की, कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है मुख्तलिफ गैसेस का, अगर हम दो मुख्तलिफ गैसेस को या तीन मुख्तलिफ गैसेस को वी कैन से दैट गैसेस फ्रॉम मोर देन वन, अगर हम इनको आपस में मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम मोशन में होते हैं, बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन एंड, और ये आपस में एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये आपस में टकरा रहे होते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर। सो यू कैन से by the definition, you can say that the spontaneous mixing of the molecules of different gases to form a homogeneous mixture by random motion of collision of molecule is called diffusion. तो ये स्पॉन्टेनियस जो मिक्सिंग है मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ गैसों का, वो क्या करते, उसमें क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं और वो आपस में कोलिजन भी करते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन, और दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ फॉर एग्जांपल, व्हेन a gas having characteristics odor is released at one corner of a room, so its smell will spread in the whole room. अगर हम गैस है कोई मतलब के तौर पर ये जो नेचुरल गैस है मीथेन, अगर जो हम इसको हम स्टोव वगैरह में यूज़ करते हैं, तो अगर हम इसको ओपन छोड़ दें तो
ओनली थोड़ी देर बाद इसकी जो स्मेल होगी वो हर जगह पे कमरे में फैल जाएगी। तो यानी अब जहाँ से गैस आ रही है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रूम में कंसंट्रेशन कम है, तो लिहाजा यानी कि अगर तो कमरे में जो इसकी कंसंट्रेशन होती है गैस की, वो चूंकि पहले तो होती नहीं है, उसके बाद जब हम गैस जो चूल्हा अगर कोई ओपन रह जाए, कोई एलपीजी का सिलेंडर जो है ना ओपन रह जाए, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में फैल जाते हैं और वो क्या करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो ये दिस इज अबाउट इट। जैसे we can say that the gas having a characteristic odor is released at one corner of the room, so the smell will spread in the whole room. So we can say that similarly, a volatile liquid or perfume is a volatile liquid evaporates and spreads in the air in a very short time. So this is another example. We use in daily life the perfume. If we can say that this is a take example of perfume, which is a volatile liquid. So if we perfume its vapors, we can say that its vapors will spread in the air in a very short time. So this is the another example of diffusion, because in diffusion the gas molecules move from a region of high concentration towards the region of low concentration. Now, so the rate of diffusion of gases varies from gas to gas. यानी गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका इन्हिसार होता है कि गैस कौन सी गैस है, यानी गैस टू गैस वेरी करता है, कुछ ज़्यादा जल्दी फैल जाते हैं, कुछ टाइम ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है गैस टू गैस पे। So we can say that the rate of diffusion of gases varies from gas to gas. In 1833, Thomas Graham, which was an English chemist, discovered that lighter gases can diffuse much faster than heavier. और जो 1833 में थॉमस ग्राहम विच वाज एन इंग्लिश chemist, उसने ये बताया कि डिस्कवर किया कि जो लाइट गैसेस होती है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, यानी जल्दी या फास्टर डिफ्यूज एज कम्पेयर टू हेवियर गैसेस, यानी जो भारी गैसेस होती है उसके मुकाबले में जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। सो वी कैन से दैट 1833 Thomas Graham, an English chemist, discovered that lighter gas can diffuse much faster than the heavier one. यहाँ पर परफ्यूम की जो मिसाल है वो बयान की गई है कि ये हमारे पास अगर एक परफ्यूम है, दिस इज अ परफ्यूम, तो ये जो परफ्यूम है इसके अगर इसको खोलेंगे तो इसके अगर ये वाले मॉलिक्यूल है परफ्यूम के, ये वाले, तो ये जिस तरह यहाँ पे बताया गया है मॉलिक्यूल फॉर परफ्यूम, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हवा में फैल जाएंगे। कैसे फैलेंगे हवा में, चूंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिस तरह बताया गया है, मेंशन किया हुआ यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन द एयर, तो हवा में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल भी होते हैं एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी होते हैं हवा में। लेकिन जब हम उसको ओपन छोड़ेंगे परफ्यूम को, तो इसकी जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे हवा के मॉलिक्यूल के साथ। सो डिफ्यूजन ऑफ perfume, this is the diffusion of what? Perfume molecule in air. So this is these are all the we can say that the molecule of perfumes which are spreading quickly in the air. Molecules, this oxygen, this nitrogens. So these perfume molecules are spreading quickly in the air because of phenomena of diffusion. Because from diffusion, this is now we can say that this is a region of high concentration of gas molecules, which is a perfume bottle containing gas molecules. This is a region of high concentration. The molecule will quickly spread from this higher concentration place towards the lower concentration place. So this is the
diffusion, from which you can say that a molecule will move from a region of high concentration towards a region of low concentration to form a homogeneous mixture. Now let's come towards effusion. First we have discussed about the diffusion. Now let's come towards effusion. Effusion क्या होता है? So let's when a gas is allowed to pass through a hole of the size of a molecule, only one molecule at a time can pass through the hole. The escape of molecules in the gaseous states one by one without a collision through a hole of molecular dimension is called effusion. So कहते हैं कि अगर गैस को हम पास करें, एक होल में से पास करें, होल में से पास करें जो मॉलिक्यूल के साइज का बराबर हो, तो एट ए टाइम एक मॉलिक्यूल उस गैस का जो होल होगा उसमें से पास होगा एट ए टाइम. फिर कहते हैं कि दी एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट, यानी जो मॉलिक्यूल्स का जो एस्केप है गैसियस स्टेट में एक एक करके विदाउट कॉलिजन, बगैर टकराव के, वन बाय वन, यानी अगर मॉलिक्यूल किसी जगह से पास हो रहे हैं एक एक करके बगैर किसी कॉलिजन के, टकराव के, एक सुराख में से, तो जो मॉलिक्यूलर साइज का डायमेंशन का हो तो उसको कहते हैं इफ्यूजन. यानी अगर हम गैस को किसी जगह से पास करेंगे और वहाँ पे छोटा सुराख हो, तो वो जो गैस की मॉलिक्यूल है वो एक एक मॉलिक्यूल उस सुराख में से पास होगा बगैर किसी कॉलिजन की या टकराव के, तो इसको कहते हैं इफ्यूजन. यानी वन बाय वन गैस मॉलिक्यूल का उस सुराख में से पास होना विदाउट कॉलिजन, जो यानी वो सुराख जो उस गैस मॉलिक्यूल के साइज का, डायमेंशन का हो, तो इसको हम कहते हैं इफ्यूजन. यानी हमने जो था ना इसमें डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो है ना फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पर पास होना था, लेकिन विदाउट एनी होल. इफ्यूजन में मॉलिक्यूल विल पास थ्रू अ होल, मॉलिक्यूल एक होल में से पास होंगे, जो कि ये इफ्यूजन में नहीं है. इफ्यूजन में है, इफ्यूजन में होल में से पास होंगे और डिफ्यूजन में होल में से नहीं पास होंगे. वो जस्ट फ्रॉम रीजन of high concentration toward region of low concentration, so without they're passing through any hole. So effusion में गैस मॉलिक्यूल का होल में से पास होना, और होल उस मॉलिक्यूल के साइज को, डायमेंशन को, तो वन बाय वन का पास होना इसकी जो मॉलिक्यूल है गैस की बगैर किसी टकराव के, इसको कहते हैं इफ्यूजन. तो दिस इज फ्यूजन. अब यहाँ पे मिसाल दी गई है कि जो प्याज होता है, प्याज की जो स्मेल, अगर आप उसको किसी शापर वगैरह में बंद कर दें, फिर भी उसकी जो स्मेल होती है वो आप तक पहुँच जाती है, हालांकि जो शापर होता है वो बंद होता है. यानी कि जो मॉलिक्यूल से ऑफ गैस जो प्याज से निकल रहे वो उस शॉपर के होल में से पास हो रहे हैं, बाहर जाके फिर आप इसको फील करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन. यू कैन से दैट यू कैन स्मेल द ओनियन इवन व्हेन द बेग इज टाइटली सील्ड ड्यू टू इफ्यूजन. तो ये जो प्याज है, यू कैन से दैट दिस इज अ बेग ऑफ onion containing onion. This one, this is the onion. So it will smell. So
it's impossible to stop the smell, I can say, in the gas form in this bag. So the smell will pass through this bag. It will pass through this bag in all direction, you can say, because gas contain in all volume of the container or the bag. So we can say that this gas molecules will travel in all direction out of the bag, and we will feel its smell so quickly. So this is the about the diffusion, in which there is involved a layer, you can say, in the form of bag. So the movement of molecules through a hole without collision from one place to another is called diffusion. This is the diffusion of onion smell, and this is the diffusion of gases. So this is the diffusion of gases from this is a hole is passing. This is you can say that this is the region of high concentration of gases. So this all is region of high concentrations. So from high concentration, the gases are moving through a hole from this region towards this region. So these are moving like this. So this is the diffusion, in which molecules are moving from this region towards this region. This is the region of high concentration. This is the region of low concentration. So in diffusion, the gas molecules will move from the region of high concentration toward the region of low concentration to form a homogeneous mixture. So this is the diffusion. Now, let's come towards the fourth one is pressure. Pressure. The molecule of gases are in continuous state of motion. They collide with each other as well as with the wall of the container. When the gas molecules collide with the wall of the container, they exert pressure on the wall of the container. So you can say the molecules of the gas are in continuous state of motion. जो गैस के जो molecules होते हैं वो continuous motion में होते हैं, state of motion में होते हैं. They collide, वो आपस में टकरा भी रहे होते हैं एक दूसरे से with each other, और जो कंटेनर की दीवार होती है उससे भी टकरा रहे होते हैं. So जब गैस की molecule एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं या जो कंटेनर की जो बाल होती है उनसे टकरा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, एक्सर्ट प्रेशर. जो कंटेनर की दीवार होती है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं. सो यू कैन से दैट फोर्स exerted by a gas per unit area of a container is called pressure. यानी गैस अगर किसी कंटेनर के अंदर बंद है तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में टकरा रहे होते हैं और फिर वो कंटेनर के वाल से भी टकरा रहे होते हैं. तो वो जो टकराने से जो गैस के कंटेनर के ऊपर प्रेशर बनता है उसको कहते हैं प्रेशर. यानी वो प्रेशर हो, बेसिकली वो फोर्स जो होता है उसको कहते हैं प्रेशर. जो फोर्स लगा रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स इन द वॉल ऑफ कंटेनर उसको कहते हैं प्रेशर. द फोर्स exerted by a gas per unit area of a container is called pressure. So this is the formula. Pressure is equal to F by A. Yani pressure is equal to force exerted by a gas per unit area of the container is called pressure. Now you can say that the SI unit of force is Newton and that of area is meter square. So the SI unit of pressure is Newton per meter square. Newton per meter square. You can say that Newton per
meter square. So the SI unit of pressure is Newton per meter square. And you can write like this: Newton per meter square. You can write also like this. So Newton per meter square. It is also called Pascal. So Pascal is a small unit of in pressure measurement. Usually its bigger form is kilopascal, kPa is used. तो ये कहते हैं कि प्रेशर जो है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और इस पास्कल भी कहते हैं और पास्कल जो है ना ये स्मॉल यूनिट है, छोटी यूनिट है और इसकी जो बड़ी यूनिट है वो किलो पास्कल kPa हम इस्तेमाल करते हैं. Now at sea level at 0 degrees Celsius the atmospheric pressure is 760 mm of mercury. 760 it is termed as 1 atmospheric pressure. So 1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury, or 760 to or 1 mm. This is also given of mercury will be equal to 1 joule. So we can say that this is also equal to 101 3.325 kilopascal or 1.01325 into 10 pascal. तो ये उसकी यूनिट से जो प्रेशर की जो हमें बताया गया है कि ये कौन कौन से. Now let's come towards compressibility. Compressibility of gas. Gases are highly compressible. Gases, this is because that gases molecules have large empty spaces. When the pressure is applied on the gases, the distance between the molecules decreases, its volume also decreases. So, the compressibility of gases may be defined as the change in volume per unit change in pressure. तो ये बताते हैं कि गैसेस जो है कंप्रेस हो जाते हैं जल्दी. यानी अगर हम यहाँ पर ना एक कंटेनर यानी इसमें एक पिस्टन लगाऊं तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए. तो अभी कहते हैं कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. यानी कि अगर हम इस गैस के ऊपर प्रेशर लगा लें, यहाँ पर इस तरह प्रेशर अप्लाई करें, गैस की जो मॉलिक्यूल्स है ये पिस्टन है, हम इसको प्रेशर लगा लें तो फिर क्या हो जाएगा, ये गैस जो है ना ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. यानी ये जो गैस है ये अगर हम इसको यहाँ पर शो करें तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, यानी ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा कि जहाँ से इस तरह का कंप्रेस हो जाएगा, ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा गैस की मॉलिक्यूल. कहते हैं कि दिस इज बिकॉज ये इसलिए कि द गैस मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस. यानी ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स में लार्ज जो खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, इसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाता है. जब हम द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस, जब हम गैस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं जिस तरह हमने ये किया हुआ है, तो डिस्टेंस जो होता है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है वो कम हो जाता है. इस तरह ये बिल्कुल कंप्रेस हुआ है और वॉल्यूम आल्सो कम हो जाता है. यानी ये देखिए ना, ये वॉल्यूम पहले ये वॉल्यूम था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से इस तरह इतना वॉल्यूम था पहले, उसका डिस्टेंस वगैरह ये, और ये अब इतना कम रह गया है क्योंकि हमने उसको कंप्रेस किया ऊपर से. तो वॉल्यूम आल्सो कंप्रेस. तो वो कहते हैं कि जो द कंप्रेसिबिलिटी यानी गैस को जो हम कंप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या डिफाइन किस तरह करेंगे, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. द चेंज
in volume per unit change in pressure। यानी ये जो वॉल्यूम में यानी ये जो चेंजेस आ गई ना, ये पहले ये वॉल्यूम था, इसका ये वॉल्यूम था, अब ये रह गया है। तो ये जो चेंज है वॉल्यूम में पर यूनिट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यूनिट इन प्रेशर जो हम लगा रहे तो उस हिसाब से जो वॉल्यूम में चेंज आ रहे तो इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। कहते हैं हमने गैस को कंप्रेस कर लिया तो इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। नाउ let's come towards mobility. Mobility. Molecules of gases are in state of continuous motion because of the weak intermolecular forces present between them। कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो गैस के होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती है जिसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन यानी हरकत में होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। एंड दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराउंड स्पेसेस। दैट्स व्हाई गैस फ्लोस जिसकी वजह से गैस फ्लो करता है एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो हमारे पास यानी जो नेचुरल गैस है जिससे हम चूल्हे जलाते हैं या किचन में खाना पकाते हैं, ये दूर दूर से हमें सप्लाई किया जा रहा होता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हम कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो गैस के मॉलिक्यूल जो है ना ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं बिकॉज उसके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है उसके दरमियान में, जिसकी वजह से ये हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उस हरकत का ये फ़ायदा है कि फिर हम जो है ना इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं पाइपों में लंबे लंबे फासले तक जाने के इसका ये फ़ायदा होता है। सो नाउ डेंसिटी, mass per unit volume is called density। So density can be mathematically written as, so density, this is equal to mass per unit of volume. This is called density. So density is defined as mass per unit volume. Mass per unit of volume is called density. This is density, definition of density. So we can say that here it is to be mentioned that unit for density we can say will be in gaseous form gram per liter. This is in gaseous form, this is a unit of density. If we have a gas, then we will mention the density of a gas in gram per liter. If we have liquid state, we will mention its density like gram per ml. You can say gram per cubic centimeter, gram per cc. So this is in the case of liquid form. So in liquid form, we will discuss mention density gram per ml or gram per cubic centimeter, while in case of gas form, we will mention the density gram per liter. Now it is clear from the we can say that it is clear from the above formula that density is inversely proportional to its volume. The gases occupy all the space available to it because there are weaker intermolecular forces and empty spaces between the molecule of the gases, which increases its volume. So density of a gas is very low as compared to the same amount of a liquid or a solid। डेंसिटी ऑफ गैस जो होती है वो बहुत कम होती है जो लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी के मुकाबले में।
So the gases have low density, gases की density होती है, then the solid and liquid. For example, the gaseous oxygen has a density of 0.00142 gram per cubic centimeter at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, while the density of liquid oxygen is 1.149 gram per cubic centimeter at minus 103 degrees Celsius. Minus, and solid oxygen has the density of 1.42 at minus 252 degrees Celsius. So we can say that density जो होती है ना वो जो होती है मतलब गैसेस की वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में बहुत कम होती है और उसको हम ग्राम पर लीटर में इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि वो बहुत कम होती है और लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी हम यानी लिक्विड की जो डेंसिटी होती है हम ग्राम पर लीटर में इसलिए मेंशन करते हैं ग्राम पर एमएल में क्योंकि वो ज़्यादा होती है गैसेस से और गैसेस की ग्राम पर लीटर में मेंशन करते हैं क्योंकि वो कम होती है. So this is all about this, and this law related to gases will be discussed in next video. So we will discuss the law related to gases. It's a Boyle law, and you can say Charles law. We will discuss in next video. So thanks for watching.